Hello students, so welcome to my Digi Classrooms powered by A1 Toppers Academy. So dear student, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video and share this video with your friends. Dear student, we are available on all social platforms on Facebook, Instagram, web and you may contact us by call also. So आज हम लोग करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So it is one of the most important topic for the state boards as well as for the CBSE boards class 10th science. So हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? So dear students, हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे how heat is produced in the conductor. किसी भी कंडक्टर के अंदर हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, Joule's law of heating, mathematical expressions for the heating effects, how does electric iron, electric heater works on the heating effects of electric current. So these three questions are the questions which are based upon the applications of the heating effects. Why does filaments of electric bulb is made up of tungsten? And sixth question is why electric fuse in electric circuit melts when large current flows through it. So dear students, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसी नॉलेज मिलेगी विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, एंड इस नॉलेज की हेल्प से आप अपने सीबीएसई के अंदर एटलीस्ट 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय टॉपिक दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So dear student, as you know, whenever a current is passed through a conductor, it becomes hot after some times. This means that our electric energy is being converted into heat energy. There are so many devices called as electric bulb, electric furnace, electric iron, electric heater are some of the appliances which we use in our daily life which works upon the heating effects of electric current. तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि वो सारे डिवाइसेस के पीछे बेसिक मैकेनिज्म क्या है, हीट कैसे उन डिवाइसेस के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रही है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दीज थिंग्स. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर. Dear student, as we know that what are conductors? Conductors are those which have excess electrons, or we can say that even free electrons which move randomly. So whenever we connect our conductor to the source of electricity, free electrons start moving from negative terminal to the positive terminal. So while moving, they collide with the atoms and ions of the conductor and even with each other also. So during collisions, what happens? Kinetic energy of free electron transfers to the atoms or ions. So जब वो collide करते हैं तो जो kinetic energy होती है free electrons की वो transfer होती है atoms और ions के पास. So उस energy से they start vibrating with the larger amplitude. So वो large amplitude से vibrate होना शुरू हो जाते हैं, and due to these rapid vibrations, which due to these rapid vibrations the energy increases and increase of temperature also takes place. So in this way the heat is produced inside the conductor. So joules, so अगर हम बात करें इसको हम joules heat भी बोलते हैं और हम इसको joules heating भी बोलते हैं. Dear student, in 1841 James Prescott Joule experimentally studied the heating effects of an electric current और उन्होंने conclusion निकाला कि heat किसके equal होती है. Heat is equal to the square of current multiplied by resistance as well as time. So उन्होंने क्या हमें बताया था Joule's law of heating में? He said when a current flows through a conductor, heat energy generates in the conductor, right? So the heating effects of electric current depends upon the three main factors. What are these three factors? First is resistance of the conductor. As resistance is directly proportional to the heat energy, more the resistance, more the heat. Second is time for which current flows. If the time increases, if the time for which current flows increases, the heat energy also increases. So we can say that heat is directly proportional to the time. Third is higher the current, higher the heat. So relation of current with the heat is that heat is directly proportional to the square of current. So by joining all these three, it becomes H is equal to I square RT. So it is this equation is called as Joule's equation of electrical heating. Now let us understand how this equation is mathematical proof
How we prove this equation? By the mathematical way. So we have a mathematical way of proving this heating effect. So we can derive this equation by the mathematical way. So look upon this screen very carefully. Dear student, as we know that electric potential is equal to work upon charge. So from here, work is equal to potential into charge. So it becomes a product of potential into charge. From the definition of electric current is equal to amount of charge passing per unit time. So from here, charge is equal to product of current into time, or even we can say that Q is equal to IT. Current into time, product of current into time. So by substituting this value of Q in this equation, it becomes W is equal to VIT. So dear student, it becomes the first expression of work which states that work is equal to product of potential into current into time. So let it be equation number 1. So as we know that according to Ohm's law, so Ohm's law, what it states that if the physical conditions of the conductor remain same, then the potential is directly proportional to current. So by removing the sign of proportionality, it becomes potential is equal to product of current and resistance offered by the conductor. So from here students, if we will find the value of resistance, so before finding the value of resistance, हम यहाँ से directly potential की value को substitute करेंगे in equation 1. So put value V is equal to IR in equation 1. So हम value V is equal to IR को equation 1 में put करते हैं, तो क्या बनेगी students? Work is equal to product of current into resistance. So V की value IR है, उसको हम put कर रहे हैं into current and time. So after solving this equation, what does it becomes? It becomes work is equal to I square RT. So this is the value of work by putting potential is equal to current into resistance. So dear student, अगर हम लोग Ohm's law में से करंट की वैल्यू को फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगी? इट बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस. सो वो पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी. सो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वर्क किसके इक्वल आएगा? वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो ये यहां से क्या बन जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या आएगी? वर्क इज इक्वल टू V square over R into T. So this becomes the third equation to find the value of work. तो हम लोगों ने यहाँ से 3 equations पढ़ी how to find the value of work. So dear student, हम यहाँ से जब इन तीनों equations को together लिखेंगे तो work की value किसके इक्वल आ जाएगी? VIT I square RT and V square upon R into T. As we know that work is stored in the form of energy which is known as heat energy. So I will substitute W is equal to H. So what does this H states that? This H states that it is a heat energy. So अगर students W is equal to H है तो तीनों formulas क्या बनेंगे? H is equal to VIT, H is equal to I square RT, and the third one it becomes H is equal to V square upon R into T. So these are the 3 formulas of finding the heat energy, value of heat energy. So students, it's very important कि आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल टिप्स पे आनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली वो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन इस डेरिवेशन के बेस पूछेंगे. वो आपको कहेंगे कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट by using potential, resistance and current, or even they can say that
drive it by using current, resistance and time, or even they can say that drive the formula by using potential, current and time. So you have to think about it कि which formula you have to drive. So आपको ये equation आनी चाहिए how to drive it. It's very important to know how to drive it. Now students, so this is the derivation of the heating effects of electric current. So we are now moving to the next part. So dear student, this is all about the heating effects of electric current. We are now going to do all those important questions which are based upon this topic, heating effects of electric current. So our first question is, how does electric iron, electric heater works on heating effects of इलेक्ट्रिक करंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, हमारी इलेक्ट्रिक हीटर कैसे वर्क कर रहा है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे. सो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? When these appliances are in connection with the supply of electricity, they becomes hot because they consist of nichrome. So इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर nichrome होता है which have high resistivity and hence high resistance. So इनके अंदर नाइक्रोम होने की वजह से जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है, और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है. एज वी नो दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल थ्रू व्हिच द करंट फ्लोज. सो रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से क्या होता है, हीट का डायरेक्टली रिलेशन रेजिस्टेंस से है. मोर द रेजिस्टेंस मोर द हीट. दैट इज व्हाई appliances such as electric iron, electric heater works on the heating effects of electric current. So I think so आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा. Now we move on to the second question that is again very important, that is why does the filament of electric bulb is made up of tungsten. So what is the meaning of word filament dear students? So ये हमारा बल्ब है, इसके अंदर this is called as filament. It's a very very thin wire. So filament की जो वायर होती है वो बहुत पतली सी वायर होती है. So dear students, सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो फिलामेंट की वायर है वो टंगस्टन की होती है. So क्यों होता है? The filament used in an electric bulb has to get heated up to a very high temperature in order to emit light. जो हमारा फिलामेंट है, that is जो भी फिलामेंट आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, उसको हीट अप किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे so that it emits light. अगर आप लोग एक ऐसा फिलामेंट यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, देन व्हाट विल हैपन? सो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके वो मेल्ट कर जाएगा और हमारे लिए जो वो बल्ब है वो यूजलेस हो जाएगा. बट अगर हम लोग टंगस्टन को प्रेफर करेंगे तो टंगस्टन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो जो इजीली हीट अप होता है. सो दैट इज व्हाई वी यूज टंगस्टन as a filament in the electric bulb. So I think so this question is more clear to you and it's one of the very very important question for the board's point of view. So if we talk about the third question, our third question is why does electric fuse in electric circuit melts when large current flows through it. So first इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमें ये देखना होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ. इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर देयर इज अ वन वायर whose melting point is very low. So ये हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर पे फ्लो कर जाए. So वो क्या करता है, कैसे करता है? When a large current flows through a circuit and hence through a fuse wire, large amount of heat is produced. लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी. अगर डियर स्टूडेंट लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी तो जो हमारी फ्यूज वायर है वो क्या करेगी? मेल्ट करेगी. अगर वो मेल्ट करेगी तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है वो फर्दर हमारे घर पे बाकी अप्लायंसेस में फ्लो नहीं कर पाएगा. अगर वो बाकी अप्लायंसेस में फ्लो नहीं करेगा तो वो हमारे अप्लायंसेस को बर्न होने से बचाएगा. सो हमारे फ्यूज का वर्क क्या होता है? ये एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है. कैसे करवाता है आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज अ वन वायर whose melting point is very low. अगर हमारे घर पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वो वायर क्या करती है? मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देती है और वो हमें प्रोटेक्ट करवाती है हमारे अप्लायंसेस को बर्न होने से.
सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी डियर स्टूडेंट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब इट। हम आपको बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियोस और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ heating effects of electric current. So thanks for watching this. So keep sharing it and give us like. Thank you.